Caching and authentication. Why do we need Redis if we have databases? Right? So we learn the method of caching, we learn the process of caching, which is that we can store the data in the cache memory for easier access of it, faster access to it. Okay, so that is the reason behind it, and Redis provides a way to do that. Redis is a database which provides a way to store the data into a cache memory for a faster access, right? So that is the reason we need Redis. That is the reason we need Redis even if we have databases. Okay, we can take the same analogy that we took earlier. So even if we have a water cooler in our office, we still fill a water bottle and keep it at our side, keep it at our work desk. Why do we need that? Obviously, for faster access, we can drink the water from the water bottle whenever we want to. Right? We don't have to go to travel. We don't have to travel till the water cooler and then drink the water. We can simply grab the bottle and we can drink from it. So the same reason applies here as well. We don't have to reach to the database every time we need to read the data. हम लोग हर बार डेटाबेस से रीड करें ज़रूरी नहीं है. We can store the data somewhere close to our backend application so that we can read it in a fast way. We don't have to go to the database every time we need to read the data. Right? So that is what Redis provides us. Redis help us with the caching mechanism, with the caching process, or we can say that Redis help us in storing data into cache memory so that our application can access it in less time whenever it needs to. So that is the reason we need Redis even if we have MongoDB or other such databases in place. Databases are necessary, like MongoDB or MySQL are necessary to store the data, to persist the data. Redis can store the data, but not for a long, or like even if we store the data for a long period of time, it will become stale. Stale as in पुराना हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने let's take an example of books data. हम लोग एक books का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. We are creating a books management system for the web. Okay, so for all the for all the books data, we are storing it in our database. Let's say हम लोग MongoDB यूज कर रहे हैं, तो we have a collection for books in which हम लोगों ने सारे books store कर रखे हैं. So we have a lot of books documents there. अब हम लोगों का एक API है जो बुक के सारे डेटा रिट्रीव करता है. It retrieves all the data from the books collection, right? So we can read the data from the database once, and we can store that books data into the Redis, or we can store that data into the cache memory using the Redis. So the next time we want to read the books data, we don't have to go back to the database to read the books data. We can simply take it from cache memory using the Redis API, using the Redis. And this will reduce the time of API response significantly. Like hypothetically, if we assume that if it takes 2 seconds, 2 whole seconds to go to the database and come back with all the books data. So the next time that if we retrieve it from the cache using Redis instead of database, it takes only 500 milliseconds. So we can see that it's reduced from 2 seconds to 500 milliseconds, 1/4 of the time. That's a very significant difference. Obviously, we are talking in seconds, in terms of seconds only, but that 1/4 is of significant change. Like from 100%, we came to 25% of the time only. So that is a significant drop in time, right? And that's matter a lot when we are working with web application, web APIs. बट हम लोग उस डेटा पे बहुत लंबे समय तक रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब डेटा, लेट्स से वी स्टोर द डेटा राइट नाउ in the cache. We read the data from the database and we store it in the cache. After that, we made some write changes.
लाइक हम लोगों ने कुछ नई बुक रीड करी, या फिर कुछ बुक्स डिलीट हो गई, या फिर कुछ बुक्स अपडेट हो गई. Now, all those change happen, right changes happen in the database, but our cache is not updated. Or if I say, अगर हम लोग cache को update नहीं कर रहे हैं, if you are not updating our Redis cache, then the data is still, it will be sending the old data. So we need to update our cache as well. So whenever there is a write operation happening in the database, accordingly, if we have any cache which is related to that data, then we should update our cache, or we can say that we should uh, either update the cache or हम लोग वो cache delete कर दे. So next time there is again a read request for the cache, it will go back to the database, read the fresh data and store it into the cache, right? So Redis provide a way to do the caching. It is help us in reducing the API time, API response time. इसलिए हम लोग Redis use करते हैं even though we have databases. They work in conjunction. They are basically complementary to each other. They are supplement to each other, right? They're not replacing. They're just there to support each other to achieve a better software, to achieve a better application, right? Related to that, there is a concept of cache hit miss and cache hit. Okay, so we'll take a simple real life example. जैसे हम लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग इजी एक्सेस के लिए पास में रखते हैं. Maybe it's like your driving license, your Aadhaar card. So these are some documents like which we keep very handy. बहुत handy रखते हैं हम लोग, ऐसे जहाँ पे हम लोगों को quickly मिल जाए. Passport, all those documents. So we keep them handy. We keep them in a place like where we can find them easily. But uh, even after like making sure that we are keeping them safe, we try to remember like हम लोगों ने कहाँ रखा था. Even after those, even after that, like sometime it happens कि जब हम लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं हैं. ओके, समटाइम्स वो मिल जाते हैं बहुत इजीली और समटाइम्स नहीं भी मिलते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग जब कैश करते हैं, रेडिस को लेके हम लोग जब कैश कर रहे हैं डेटा, so it could be possible that we could find the data, and in some cases we may not find the data. Okay, let's take the example of books data again. Okay, हम लोगों ने let's say we have books collection, और हम लोगों का एक read API है like get all books, in which we are reading all the books from the database collection, and for faster access we store it into the cache, right? सो जब नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आएगा तो हम लोग कैश में चेक करेंगे. सो इफ वी फाउंड द डेटा इन द कैश, इफ वी फाउंड दैट बुक्स डेटा इन द कैश, then it is says that it is said that it is like basically we found the data into the cache, and we can say that it is a cache hit because like we found the data. However, if we look for the books data into the cache and if it's not available, let's say the request is coming for the very first time. So obviously we don't have the data, books data into the cache. So when we check for the data into the cache, then we can't found it. And in that case, we call it as a cache miss, right? So it's a very simple thing. So when we are looking for data and if we found it in the cache, then we say it cache hit, and if we don't find it in the cache, then it is said as cache miss, right? Very simple. मिल गया तो हिट है, नहीं मिला तो मिस है. Simple terminology: cache hit and cache miss. The next question is, what is authentication and authorization, and what is the difference between those two? Right. So let's take an example. Again, a simple example, not related to IT, not related to software development. Again, तो लेट्स से एक सेमिनार हो रहा है, और सेमिनार में इनविट सेमिनार में एंट्री करना, लाइक एक सेमिनार हो रहा है, लेट्स से इन अ बैंकेट हॉल देयर इज अ सेमिनार गोइंग ऑन, whatever topic, but the seminar is going on.
So the seminar can be attended not by everyone. हर कोई सेमिनार अटेंड नहीं कर सकता है. सेमिनार में सिर्फ उन लोगों को एंट्री करने की परमिशन है विच हैज़ अ वैलिड इनविटेशन कार्ड. ऑलराइट, क्योंकि गेट पे वो चेक करते हैं. दे आर चेकिंग द इनविटेशन कार्ड एट द एंट्री गेट, एट द मेन गेट. Only if you have the invitation card and a valid invitation card, not an invalid one, not a forged one. ऐसा नकली बनाया हुआ फेक वाला, like that won't help you there. You need a valid invitation card, and only if you have it, then you will be allowed to enter into the seminar hall. Okay, so that is one thing. Second, on the invitation card, it is also mentions like what is your role, or what you are going to do in the seminar. Are you a facilitator? Are you a presenter? मतलब जो सेमिनार प्रेजेंट कर रहा है, फैसिलिटेटर जो फैसिलिटेट कर रहा है, लाइक ही इज प्रोवाइडिंग समथिंग लाइक सम additional tool or some additional feature to the main presenter. We can say support कर रहा है. Facilitator means like he's supporting the main presenter. तो या फिर attending, like we are just there to attend the seminar, we are the audience, or we are the organizer, we are the volunteers. Okay, so on the invitation card it is also mentioned, or we can say not an invitation card, maybe an ID card. Okay, either, like we can use either of the one. या तो इनविटेशन कार्ड है जिसपे आपकी डिटेल लिखी हुई है, एंड इधर इट कुड बी आइडेंटिटी कार्ड. लेट्स टेक आइडेंटिटी कार्ड हियर. सो आइडेंटिटी कार्ड वैलिड होना चाहिए तब आप एंट्री कर पाओगे, एंड बेस्ड ऑन your role on that identity card, you'll be allowed to perform some operation, allowed to perform some actions in the seminar. Right, so this process, so basically we can consider the invitation card or the ID card as a way to validate that you are the intended person to go into the seminar. All right, and based on the role mentioned on the invitation card or the ID card, we can know like what role you can perform, what is allowed for you to do, and what is not allowed for, like what comes in your range and what is out of your range. Okay, as the attendee, you can also you can only sit in the audience part, right? You can't go to the stage and present. Only a presenter can go there, so that is his role or her role. Right, so that invitation card or the identity card is playing a vital role. All right, and we call this process basically having an identity card, and it's like based on that making sure that you are a intended person to be in that seminar. Right, so that process to identify you. Okay, basically that ID card or that invitation is your identity. Right, and the process to identify someone or making sure like their identity, like what they're saying, they are really what they're saying. Okay, so let's say it's like if I say that I'm Arpit Jain, so the only way to make sure that's like either through some ID card, like you can check my Aadhaar card, or like you can check my passport. So that way, that ID card will provide my identity, will prove my identity. Okay, so this this process where we prove our identity is known as authentication. And authorization, so based on the role, like the seminar ID card, based on your role, you're allowed to perform something and some actions, and you're not allowed to perform some, okay, some action. Like a presenter, based on his role, he can go to the stage and he can present the topic. Okay, so the process of allowing something or authorizing someone to perform some operation, to perform some task based on its role, can be termed as a authorization. Okay, so in a very simple term, that is authentication and authorization. We perform the same thing when we are creating a web application as well. So when you are working on a web application which is data driven, and in that like a few data could be public, जो हर कोई देख सकता है. Public as in anyone can see that data, anyone can see those pages. All right,
and there would be some data, there would be some pages which is specific, which is sensitive, जो private है, जो sensitive है, which we can't share with public, मतलब हर किसी के साथ हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे हम अमेज़न की बात करें। अमेज़न बहुत बड़ा शॉपिंग वेबसाइट है, एंड वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। यू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस और योर फ़ोन नंबर और एक पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं। यू क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं अकाउंट क्रिएट किया है, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी क्रिएट करी अमेज़न.com पे या अमेज़न.इन पे, ताकि हम लोग वहाँ पे जो शॉपिंग करें वो शॉपिंग हमारे अकाउंट में हो, हमारी आइडेंटिटी के साथ हो। ओके, तो जब भी आपको कोई परचेज करना रहता है तब आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप परचेज कर पाओगे। बट अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स देखना है, आपको ब्राउज करना है, डिटेल्स देखना है प्रोडक्ट्स की, तो आप कर सकते हो, बिकॉज दैट डेटा इज अवेलेबल पब्लिकली। बट इफ यू वांट टू परचेज द प्रोडक्ट, देन यू हैव टू क्रिएट अकाउंट, देन यू हैव टू बी लॉग इन। और जब हम लॉग इन करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेज़न हो गया या यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, ऑल दिस वेबसाइट, तो हम लोग जहाँ जहाँ पे अकाउंट बनाते हैं जिन भी वेबसाइट पे, और जब हम लॉग इन करते हैं तो दैट प्रोसेस ऑफ लॉग इन इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। वी आर प्रोवाइडिंग सम डिटेल्स बेस्ड ऑन विच द प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाइज अस। It identifies that you are Arpit, or you are Rahul, or you are Rakesh, or you are Suresh, etc. Okay, so based on those details, it could be email ID and password, it could be your mobile number and password, or it could be your mobile number and OTP one time password. Okay, so it could be anything. So based on that information हम लोग identify करते हैं कि ये कौन है, who is that person, who is this person. So this process is known as authentication. And then the second process is authorization. तो अब मैं अमेज़न की बात करूँ फिर से, तो अमेज़न पे सिर्फ सिर्फ बायर्स नहीं होते हैं, अमेज़न पे सेलर्स भी होते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड है वो कोई ना कोई सेलर ने लिस्ट किए हुए हैं, और सेलर ने भी अपना अकाउंट बनाया होगा जिस तरह से बायर ने बनाया है। तो जिस तरह से बायर अकाउंट बनाता है तो बायर को कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है अमेज़न पे। जैसे वो अपना कार्ट बना सकता है, कार्ट में आइटम्स ऐड कर सकता है, वो कार्ट के आइटम्स को बाय कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, वो अपने ऑर्डर्स देख सकता है। सो ऑल दोज privileges are available to a buyer, and when it comes to seller, जो भी अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सो दे ऑल्सो गेट अकाउंट। एंड व्हाट आर देयर प्रिविलेजेस जो हम सोच सकते हैं, तो देयर प्रिविलेजेस वुड बी टू ऐड अ प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में ऐड करना है वो कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना है वो कर सकते हैं, प्रोडक्ट का रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स कैन मैनेज बाय सेलर। ओके, तो ये जो चीज़ जो सेलर कर रहा है वो बायर को अवेलेबल नहीं है। अ बायर कांट ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, ही कैन ओनली buy it, he can't create a product on the Amazon platform. Okay, so based on the role we get certain permission and certain rights that we can perform. Okay, and making sure that, like, based on your role or based on your identity, make जब हम लोग ensure करते हैं based on your identity that you are allowed to do this or you are not allowed to do this, so that process is known as authorization. एक और अगर एग्जांपल लें, जैसे हम फेसबुक का एग्जांपल लें, तो फेसबुक पे अकाउंट बनाना हम लोगों का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना हो गया। और जब भी हम लोग उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे बाय प्रोवाइडिंग अवर आइडेंटिटी डिटेल्स लाइक ईमेल या पासवर्ड, हम लोग ऑथेंटिकेट कर रहे हैं अपने आप को, हम लोग अपने आप का facebook.com पे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। हाँ, ओनली दैट आफ्टर authenticating ourselves we would be allowed to enter the Facebook, अदरवाइज हम लोग सिर्फ बाहर बाहर से फेसबुक का पेज देख पाएंगे। एंड वंस वी आर इन द अकाउंट, नाउ वी हैव सम राइट्स, लाइक हम लोग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग फीड देख सकते हैं, फीड में हम लोग कमेंट कर सकते हैं, फीड में हम लाइक कर सकते हैं, हम लोग अपने खुद के पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं, एल्बम में फोटोज ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स।
and all other users who have an account, who have created an account with Facebook, they can also perform the same thing. ठीक है, लेट्स से यूजर ए है, यूजर बी है, दोनों ने अपना अकाउंट फेसबुक पे बनाया। अब ए ने कुछ पोस्ट क्रिएट करी है, बी ने कुछ पोस्ट क्रिएट करी है। सो इज इट वैलिड टू अलाउ यूजर ए टू मेक चेंजेस इन यूजर बी's पोस्ट? इट वोंट बी फेयर। हम लोग यूजर ए को ये अलाउ नहीं कर सकते हैं कि वो यूजर बी की पोस्ट को एडिट कर सके या उसको डिलीट कर सके या यूजर बी के लिए पोस्ट क्रिएट कर सके। दैट वुड बी नॉट अ वैलिड थिंग टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर ए जो है वो सिर्फ अपने लिए पोस्ट क्रिएट कर सकता है, अपनी ही पोस्ट जो उसने पोस्ट बनाई है उसको वो एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। सेम गोज विद यूजर बी एज वेल। तो यूजर बी ने जो पोस्ट क्रिएट करी है वो उन्हीं पोस्ट को लाइक कर सकता है, उन्हीं पोस्ट को एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। So basically, this is the process, like based on again role. We can say role is one thing, but again based on the identity, we get something like we can say that the user A is the owner of the content created by him. Similarly, user B is the owner of the content which is created by him. And authorization says, basically the process of authorization says that only the owner can change the data, or only the owner can change the data that he created, right? We can't allow other person to make changes in that data. So that is the process of authorization. So this uh, basically this discussion also depicts the difference between two. So authentication only tells like who you are, and authorization tells what you can do. Okay, so we can say authentication is to know who you are, and authorization is to know what you can do. Okay, now next question, what is GWT? Describe the parts of GWT. What are the benefits of using GWT, right? So GWT is related to the authentication and authorization. ठीक है, तो अगेन अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं लॉगिन पेज पे। वी प्रोवाइड अवर क्रेडेंशियल्स लाइक ईमेल एंड पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेट अवरसेल्फ एंड देन वी एंटर इनटू अवर अकाउंट। हम लोग अपना डैशबोर्ड देख पाते हैं, अपना यूज़र अकाउंट देख पा सकते हैं, हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट पोस्ट, एल्बम, एटसेट्रा, राइट? सो we just authenticated ourselves on the login page, but to ensure that all those operations like dashboard को देखना या post को देखना, settings change करना, अपनी profile change करना, post create करना, तो all those things need the same identities, like we need identity there as well. So the one way would be is like we ask or we prompt for the username and password every time the user is making any change, is doing performing any action, right? So that could be a one way to do that, but obviously that doesn't feel right. अगर हम लोग let's assume you are a Facebook user और अगर मैं आपको हर पेज पे email and password पूछूं तो you'll be frustrated, इरिटेट हो जाएंगे हम लोग अगर मुझे अपना ईमेल एंड पासवर्ड हर बार देना पड़े, लाइक आफ्टर एवरी मिनट, आफ्टर एवरी 30 seconds, if I need to provide my login credential, then I would be irritated, I would be frustrated, and I won't be using the Facebook anymore because it's a bad user experience. बहुत बुरा यूजर एक्सपीरियंस है अगर मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन डिटेल बार बार देनी पड़ेगी। सो टू ईज आउट दैट प्रोसेस, to ease out the authentication process, what we do is like हम लोग सिर्फ एक ही बार authenticate करते हैं यूजर को और उसके बाद we kind of create a token for that, okay? And using that token, like token could be anything, like हम लोगों ने एक चीज दे दी कि like hold this thing, and if you have it then it means that you are authenticated. Like after first authentication we gave the user uh, like a memento, some things like a thing like which he can hold, and based on that we can identify that the user is authenticated. He does not have to provide the username and password again. Okay,
So JWT is one such thing. JWT, or the full form is JSON Web Token. Okay, so the token is present in the name itself. So JSON Web Token is a way uh, to provide some information, provide some data to the user. Using that data, like we can ensure that the user is authentication. Alright. So if we try to understand, so हम लोग इस प्रोसेस को अगर समझने की कोशिश करें, तो जब हम लोग फेसबुक पेज पे गए, हम लोग ने लॉगिन पेज ओपन किया एंड वी प्रोवाइडेड अवर डिटेल, हम लोगों ने अपना ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया. बेस्ड ऑन दैट द फेसबुक आइडेंटिफाइड अस एज अ वैलिड यूजर and it allowed us to enter into the system, and along with that it also provided it with a token. It provided with us a JWT token, we can say. It provided a JWT to us, and now we can carry that JWT wherever we go in the Facebook platform. And based on that, we can ensure, or we can say the Facebook platform is ensuring that we are a valid user, we are a authenticated user to access all those things. Even that JWT can be also checked for authorization. Basically, we can use some personal information stored in the JWT to know who is the user and what he can do, like what he is allowed to do, right? So that is JWT. JWT टोकन में तीन पार्ट होता है: header, payload, and signature. The header part says like what algorithm why we are using. क्योंकि जो JWT token होता है वो it's look like a simple string but it's not a plain text string. It is encoded. Encoded रहता है वो, encrypted, मतलब it's not a plain text, like it's not written ABC directly. जैसे हम लोगों का पासवर्ड अगर 1234 है तो it's not visible as 1234. It is visible in a different format, so the user can't see directly what the information presented in. Right. So उसके लिए वो encoding करने के लिए, वो encryption करने के लिए we need to use some algorithm. वो hashing करने के लिए we need to use some algorithm. So जो header होता है JWT का, उसमें ये information रहती है कि what algorithm we are using. The second part is the payload, and that is the core part of it, which stores like the data we are storing in it, like the some personal identity of the user to which we are issuing this JWT. जो भी यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ है उस यूज़र की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसको देख के हम लोग, जिसको रीड करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन यूज़र है. So that information is stored in the payload. And the third part is the signature. And this is the sensitive part of a JWT. Signature यूनिक रहते हैं, मतलब फेसबुक JWT इशू कर रहा है, जीमेल JWT इशू कर रहा है, यूट्यूब JWT इशू कर रहा है, इंस्टाग्राम JWT इशू कर रहा है. तो सारे प्लेटफॉर्म JWT इशू कर रहे हैं, बट वो जो एनकोडिंग कर रहे हैं तो मे बी एल्गोरिथम सेम यूज़ कर रहे होंगे, बट उनका जो सिग्नेचर होगा दैट विल बी डिफरेंट. एंड बेस्ड ऑन दैट सिग्नेचर, लाइक इट वेरीफाइज द क्रेडिबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द टोकन. जो जेरेबिलिटी इशू होता है उसका जो सिग्नेचर होता है दैट इज समथिंग सेंसिटिव, एंड बेस्ड ऑन दैट इट रिकॉग्नाइज और इट वेरीफाइज वेदर द टोकन इज वैलिड और नॉट. मतलब अगर इट्स लाइक अ यूनिक आइडेंटिटी दैट आई एसोसिएटेड विद द जेडब्ल्यूटी. तो हर एक प्लेटफॉर्म अपना खुद का सिग्नेचर क्रिएट करता है. सिग्नेचर we can think of it as a random character, random string, okay, which is kept somewhere hidden, which is not available publicly. ठीक है, हम लोगों ने अपना खुद का एक like signature create कर दिया. It's like based on which we can verify whether a JWT is valid or not. So those are three parts, and let's take a simple example of JWT, like how JWT looks like. So it looks like this string, looks like a string like this. इसमें three parts होते हैं, and those three parts are separated by dots, and I just color coded them differently so we can see them differently. So this first part is the header. The second part from here till here is the payload, the data that we stored in the JWT. And this last part is the signature.
You can verify a signature based on the signature only. Like you can verify a token based on this signature. If the signature is not matching, or if we try to decode the JWT using a different signature, then it can't be. We can't verify that. Basically, it will simply fail to decode that data. Now, what are the benefits of JWT? Okay, so JWT is considered as a very secure way to manage the identity of a user on a platform, because JWT, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था सिग्नेचर के बारे में, हेडर जिसमें एल्गोरिथम सेव रहते हैं सिग्नेचर. So if there's any temporation, like even if I just change a single keyword from here, like if I just remove a single letter from this JWT, and if I try to decode it now, then it won't be. It will fail to decode it because it's tempered now. So if someone get access to the JWT and if they try to tamper with it, अगर उसके पेलोड में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं या उसका हेडर कुछ चेंज कर दिया या सिग्नेचर चेंज कर दिया, तो it simply won't work because the JWT will be corrupted in that case. Like it won't be decoded again, it will be simply corrected. So this way it is very secure, and like if someone tries to tamper it, it will simply fail. And even if they're successful in tampering with the JWT, it won't be able to. Basically, it won't be any effective because जब हम लोग उसको decode करने जाएंगे तो वो decode नहीं होगा. It won't be decoded, and that's how it ensures the security. The second big feature about JWT is server scalability, because जब हम लोग JWT टोकन इशू करते हैं तो वो हम लोग सर्वर पे स्टोर नहीं करते. वी डोंट स्टोर द JWT ऑन द सर्वर. हम लोग सर्वर पे किसी फाइल में या सर्वर के सेशन में या सर्वर के फाइल में स्टोर नहीं करते हैं JWT को. हम लोग JWT को रिस्पॉन्स में भेज देते हैं. एंड नाउ आफ्टर दैट आफ्टर दैट JWT इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड. वो फ्रंट एंड पे, वो ब्राउज़र में कहीं पे स्टोर रहता है. और एवरी टाइम हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं, once we authenticated, so all the requests coming after the authentication, लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद जितनी भी रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, उन सारी रिक्वेस्ट में हम लोग JWT को भेजते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट JWT, द सर्वर आइडेंटिफाइज कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है और रिक्वेस्ट कौन कर रहा है. सो सिंस द डेटा इज नॉट स्टोर्ड ऑन द सर्वर, हम लोग अगर सर्वर चेंज भी करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत होता है, लाइक वी हैव अ सर्वर एंड सर्वर इज अ मशीन, और मशीन की कुछ कैपेबिलिटी होती है. लेट्स से इट कैन हैंडल अ मिलियन रिक्वेस्ट. वो एक मिलियन रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है. बट हम लोगों के 10 मिलियन यूज़र है, और उन सबको हैंडल करने के लिए हम लोगों को सर्वर बढ़ाना पड़ेंगे, हम लोगों को मल्टीपल सर्वर्स लगाने पड़ेंगे. सो इन सच ए केस, अगर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर पे सेव करेंगे तो वो एक ही सर्वर पे स्टोर होकर रह जाएगी. और अगर यूज़र ने एक बार ऑथेंटिकेट कर लिया और वो सर्वर 1 से किया था, और नेक्स्ट टाइम उसकी रिक्वेस्ट अगर सर्वर 2 को चले जाती है, तो सर्वर 2 के पास डेटा नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है वेदर to identify whether this user is authenticated or not. So in such case, the server 2 will respond that please authenticate yourself again. आप अपने आप को फिर से ऑथेंटिकेट करो, आपकी आइडेंटिटी फिर से बताओ मुझे, आई डोंट नो हु यू आर. बट in case of JWT, the information is not stored on the server. ये information हम लोग भेज देते हैं रिस्पॉन्स में, and it is stored on the front end side. और every request में हम लोग JWT send करते हैं. तो अगर server 1 ने authenticate किया था और टोकन भेजा था, and if the next time the request goes to the server 2, then the information, the identity information is available in the JWT. And basis on that, the server 2 can identify who you are and from where you are sending the request. Okay, request कहाँ से आ रहा है और कौन कर रहा है. So that can be easily identified by the server too. So that is another big feature of JWT. Thank you.